Hello, my dear students. Welcome back to the Fundamental Pharmacy. My name is Sachin Jadhav, founder Fundamental Pharmacy, author of Fundamentals of GPAT Niper DI Pharmacist Volume 1, GPAT Cracker Achiever MCQ book, and few other books. Welcomes you in this YouTube video session. My dear students, if you are new on our channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you will never miss any video from my side. In this video, we are going to see very important part for your GPAT, Niper, drug inspector and other kind of exams. And in this session, particularly, we are going to see knowledge booster part 4. That is the different schedules as per Drug and Cosmetic Act 1940. Believe me, this is very important part. Already lot of times they already asked the question on this in various kind of exam like GPAT, Niper, drug inspector, government pharmacist. I will revise you all schedules in very short period. So it's my request to you, please watch this video until end. Different schedules of drug as per Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945. Now first Schedule A. Schedule A consists of a different per pharma for forms. Different forms under the DNC Act. Schedule A consists of different forms under DNC Act. Form number 1 to 50. That is a different kind of forms for application, different kind of forms for issue of license, different kind of forms for renewal of license. So Schedule A consists of different forms under DNC Act. Now Schedule B. Schedule B consists of fees or different amount charged by government analyst, okay, by CDL, or fees for test in the central laboratory, or fees charged by government analyst. Okay. Now Schedule C, list of biological and special product, particularly injectable, applicable to the special provisions. Example, sera, vaccines, penicillins, etc. So biological products. So Schedule C consists of a biological and special product which are injectable. Schedule C1 consists of again list of biological and special product which are non-injectable. Okay, तो यहाँ पे Schedule C क्या है? Injectable है. C1 non-injectable. Schedule C1 list of biological and special product, that is non-parental, applicable to provisions. Example, digitalis, hormones and ergot. Okay. Now Schedule D. D consists of drugs which are exempted from the special provisions of the import. You can remember these Schedule A, B, C, C1 and D by a very simple trick. So suppose that you are taking admission in the particular pharmacy college. कि आपको एडमिशन करना है कॉलेज में, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू अप्लाई. अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आगे का प्रोसीजर नहीं होगा. सो फर्स्ट शेड्यूल ए, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म. ओके, वंस यू अप्लाइड, जैसे आपने अप्लाई किया तो उसके बाद में तुरंत आपको फीस भरना पड़ता है. सो दैट इज शेड्यूल बी इज नथिंग बट द different fees charged by CDL. Schedule C, you can see C for care. You have to take more care regarding parenteral products. So list of biological and special products which are injectable in the Schedule C, like sera, vaccines, injections of penicillin. Schedule C. So again list of parenteral product which are not given by parenteral route. So ये injectable नहीं रहेगा. So Schedule C is non-injectable. Digital is hormones, oral, ergot preparation. Now Schedule D. D for exempted drugs. D for exempted drug from certain provision of import. Okay. Now we'll see the next. Schedule E1. E1 consists of a list of poisonous substance under Ayurvedic, Siddha and Unani system. So list of poisonous substance. For example, यहाँ पे example एक ले लो आप, जैसे aconite होता है. Aconite is a poisonous drug containing alkaloids. सो शेड्यूल E1 के अंदर उसका एकोनाइट का आएगा. एकोनाइट होता है, बहुत सारा होता है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होता है. सो शेड्यूल E1. नाउ शेड्यूल F इज फॉर प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द ब्लड बैंक. एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. शेड्यूल F के ऊपर, शेड्यूल C1 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शेड्यूल ए के ऊपर, हर एक शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस. ओके. सो शेड्यूल F कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक. याद रखो उसको, ब्लड बैंक के रिलेटेड शेड्यूल F है, उसमें F1 आता है, F2 आता है. तो शेड्यूल F1 क्या है? सो शेड्यूल F1 इज नथिंग बट द स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू biological and special products. For example, bacterial and viral vaccine, sera from living animals, bacterial origin, diagnostic agent, etc. So Schedule F1, Schedule F for blood bank.
Okay, Schedule F is for provisions of blood bank. Schedule F1 is for special biological product like vaccines. Okay, vaccines and serum. So F is for blood bank. F1 is for vaccine and serum. F2 is for surgical tracing. So what is F2? Schedule F2 as per DNC Act will give standards of surgical tracing. Schedule F2 surgical tracing. So Schedule F3. Schedule F3 is nothing but the standards for umbilical tips. Standards for umbilical tips. You have to remember question आ चुका है. Now Schedule FF और Schedule FF const of standards for ophthalmic preparation. के जो schedules है Schedule F के Schedule F में आता है आपका I will revise quickly again. So first is the Schedule F. F means for blood bank. Okay, provisions of blood bank. Schedule F1 is nothing but the provisions of vaccines, bacterial and viral vaccines and serum. Schedule F2 is for surgical dressing, standards for surgical dressing. Schedule F3 is for standard for umbilical tape. Schedule EFF is nothing but the standards of ophthalmic product और ophthalmic preparation जैसे आई ड्रॉप हो गया आपका आई ऑइंटमेंट हो गए सो वट एवर स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑप्थेल्मिक preparation they are given in the schedule EFF. Now schedule G consists of a list of drug or list of substances or drugs that you have to take under medical supervision. So list of substances to be used under medical supervision and they are labeled accordingly. That is लेबल उसमें होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस ड्रग एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन ऐसा एक लेवल रहेगा उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग सो शेड्यूल जी नाउ शेड्यूल एच व्हाट इज शेड्यूल एच लिस्ट ऑफ ड्रग्स or prescription drugs so list of drugs that should be sold by should be sold on the prescription of registered practitioner. So schedule H is the list of substances or drugs that should be sold by retail only on the prescription of registered medical practitioner. For example, all kind of drug they come under the schedule H. Now schedule J. So what is schedule J? List of diseases or ailments that should not purport or that should not claim to cure. So a drug should not claim to cure these diseases. So those diseases which are given in the schedule J. तो शेड्यूल जे में ऐसे डिसीज का लिस्ट दिया है कि कोई ड्रग उसको क्योर नहीं कर सकता एंड ड्रग शुड नॉट परपट और ड्रग शुड नॉट क्लेम टू क्योर. तो फॉर एग्जांपल एड्स कैंसर कैटरैक्ट डायबिटीज तो इसको कोई क्योर नहीं है. ये जो ड्रग्स है कैंसर एड्स कैटरैक्ट डायबिटीज there is no cure. Okay, you can control the symptoms, there is no cure. Okay, so a drug should not claim or drug should not purport to cure the diseases which are given in the schedule J. Now schedule K is nothing but a list of drug that can be exempted from certain provisions related to manufacturing. Schedule K exempted drug from manufacturing. What is schedule M? Schedule M is nothing but the GMP requirement for manufacturing premises, GMP requirement for or factory premises, plant and equipment. So GMP for allopathic drug. Schedule M is GMP for allopathic drug. ठीक है. Schedule M1 GMP for homeopathic drug. Schedule M जो है वो क्या है एलोपैथिक ड्रग का GMP. Schedule M1 क्या है होम्योपैथिक ड्रग का GMP. ठीक है. Schedule M2. Schedule M2 क्या है GMP of cosmetics. Schedule M2 GMP of cosmetics. Schedule M3 GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस. तो यहाँ पे उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है सो आई विल रिवाइज इट क्विकली. शेड्यूल एम GMP फॉर एलोपैथिक ड्रग. शेड्यूल M1 GMP फॉर होम्योपैथिक ड्रग. शेड्यूल M2 GMP फॉर कॉस्मेटिक्स. शेड्यूल M3 GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस. ओके, सो अगेन व्हाट इज शेड्यूल N? शेड्यूल N is nothing but the list of minimum equipment required to run a pharmacy efficiently. So list of equipment to run pharmacy efficiently is given in the schedule N. तो आप ऐसे याद रख सकते हो. N means क्या? N means new क्या है कि आपका B.Pharm हो चुका है, आपको नया फार्मेसी ओपन करना है. So you have to open a new pharmacy and for that list of minimum equipment to run a pharmacy efficiently. So that is mentioned under the schedule N of Drug and Cosmetic Act. Now schedule O, it gives the standards for disinfectants. स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. सो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं सबके बारे में, हर एक के बारे में क्वेश्चन पूछा है. सो आई विल नॉट रिपीट कि इसके बारे में पूछा है इसके बारे में नहीं, सबके बारे में क्वेश्चन पूछा है. शेड्यूल ओ कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड
For example, phenol, then your hydrogen peroxide, then alcohol, etc. etc. Schedule J consists of a list, और ये already हो चुका है. Schedule J consists of a list or list of diseases or elements that drug should not purport to cure. Okay. Schedule K already हो चुका है, exempted drugs from manufacturing. Schedule P, okay. So इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. Schedule P is nothing but P for period. So Schedule P consists of a life period of drug. हर एक का कुछ एक्सपायरी पीरियड फिक्स है. जैसे विटामिन का गोली अगर आप लेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स. सो अगर इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा वैलिडिटी, उसके ऊपर एक्सपायरी लिखा होगा 24 मंथ्स. ओके. सो शेड्यूल पी मीन्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग. सो लाइफ पीरियड जैसे एक्सपायरी पीरियड ऑफ ड्रग. सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉर्मुलेशंस. शेड्यूल पी इज लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग. इसमें और एक आता है शेड्यूल पी वन. इसमें और एक आता है शेड्यूल पी वन. शेड्यूल पी मीन्स लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग और शेड्यूल पी वन मीन्स पैक साइज ऑफ ड्रग. ठीक है, पैक साइज ऑफ ड्रग. नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल क्यू. Q means coal tar and dyes or colors which are permitted to be used in the cosmetics. For example, these cosmetic drugs and cosmetics: caramel, titanium dioxide, tony red, etc., panaceo, like etc. So coal tar and dyes, colors, coal tar and dyes, they are mentioned in the schedule Q. So standards of coal tar and dyes and colors is given under schedule Q of DNC Act. Now next one is schedule R. यू कैन से आर फॉर रबर. और रबर से क्या बनता है? रबर से बनता है आपका कॉन्डोम्स एंड डायफ्राम वगैरह. सो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके. शेड्यूल आर फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. आर फॉर रबर, रबर से बनता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओके. शेड्यूल आर. शेड्यूल R1 इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस. मेडिकल डिवाइसेस का स्टैंडर्ड्स शेड्यूल R1 के अंडर आता है. देन शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक. एस फॉर standards for cosmetics. Schedule T is nothing but the requirement of GMP practice premises for Ayurvedic and Unani drugs. So इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है. What is Schedule T? So whatever GMP for Ayurvedic, Siddha and Unani drugs are there, so it is mentioned under the Schedule T of DNC Act. Okay. Schedule T, that is a T. You can remember T for traditional medicine. T for traditional medicine. Schedule T means GMP for traditional medicine system. Traditional medicinal system कितना आता है? आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा. ओके. शेड्यूल यू. शेड्यूल यू मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग. सो पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ड्रग इज गिवन अंडर शेड्यूल यू. ओके. शेड्यूल U1 अगेन मैन्युफैक्चरिंग record and analytical record of cosmetics. So particulars to be mentioned under manufacturing record and analytical record of the cosmetics. So U for drugs and U1 for cosmetics. So manufacturing and analytical records. जैसे होता है ना आपका BMR, batch manufacturing record, और analytical record आता है उसका certificate of analysis, COA. So okay, so manufacturing record and certificate of analysis for drug is mentioned under schedule U, and for cosmetic under U1. Now what is schedule W? Schedule V. So standards for patent and proprietary medicine is given under schedule V. What is schedule W? Okay, what is schedule V? Standards for patent and proprietary medicine. So if anybody does not want to disclose his formula, अगर कोई किसी का फॉर्मुलेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता एंड फॉर्मुलेशन उसमें सिर्फ विटामिन वगैरह रहेगा, सो स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन. तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन किसको बोलेंगे? जिसका फॉर्मूला बाकी लोगों को मालूम नहीं है, उसको प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोलेंगे. सो स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, दैट इज शेड्यूल V अंडर शेड्यूल V. व्हाट इज शेड्यूल W? शेड्यूल W इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली. ओके. सो इसमें कौन सा ड्रग आता है? फॉर एग्जांपल एस्पिरिन आता है एक आपका, दूसरा आता है फेरस सॉल्ट्स, फेरस फ्यूमोरेट, फेरस एस्कॉर्बिट, फेरस सल्फेट, एक्सेट्रा. डाइथाइल कार्बोमेजिन साइट्रेट, DEC आता है. इसमें आपका क्लोरमफेनिकोल आता है, क्लोरमाइसिटिन आता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग व्हिच कम्स अंडर द schedule W, that is a drug should be marketed under the generic names only. What is schedule X? X means list of narcotic and psychotropic substances. So habit forming जितने भी है narcotic drugs से or sedatives, hypnotics, so they comes under the schedule X. X, you can remember X means no. X is the symbol for no, and government say no for drugs.
So list of narcotic drugs and psychotropic substances, for example, opium, morphine, sedative hypnotics, narcotic drugs. Schedule Y, requirement for guidelines on clinical trials for import or manufacturing of new drug. So Schedule Y is related with the clinical trials. My dear students, if you want such kind of full lectures, you can join our GPAT Niper 23 online course, and where you will have live lectures, recorded lectures, and study material in the form of hard copy, online test. Everything is included in the 8,000, and you can expect discount of 2,000 rupees from me for this year batch. You can see we have very much amazing results from past few years, and if anybody wants these books also, they can contact me on my number. My number will be available in the description box of this video, and everything whatever I am presenting is a content of my books only, so it is also present in the books.